Both men and women are distinct social groups and are affected by gender inequalities but in very different ways. इसका भी आंसर ट्रू होगा. Men and women are a category, gender category, and that's why they are also a social group in themselves. Now, they both their position in the social map is very different, and they both are affected by uh, the social relationships etc very differently. So this is true. तो आपको ऐसे पढ़ना है. This is very easy question. Next question is generation gap is a dash because it is common to many societies and many time periods. Generation gap is a social phenomena. ठीक है, because it's a social thing which is happening around. Next question is question number 6. Colonialism gave birth to its own enemy, nationalism. True or false? The answer is true. I dealt with this in detail in yesterday's class, and we saw that how uh, colonialism basically uh, created a new middle class who were Western educated, who were urbanized, and who actually carried the first ideas about nationalism and all. Okay. Seventh, if one believes that he or she is a part of dash, then belief is more important than the actual proof of commonalities. तो इसका आंसर होगा community. Okay, if you believe that you belong to certain community, yesterday I gave you definition also which said that a community is a belief in commonalities, as in religious commonality, lingual commonality, regional commonality, kinship ties, etc. But as far as the need of proof is given required, there is no need to prove it. There might be factual existence of it, or there might be no existence at all. But we are not getting into the nitty gritties of proving it to be true or false. It's more about belief. What a person believes. How do you feel about the particular community? So इसका आंसर हो जाएगा if one believes that he she is a part of community. Now next question, multiple choice. Statement A is sociology is concerned with the analysis, description, and interpretation of social action. Okay. Next, social action is basically structured and regulated. Yes, both are true. ठीक है. So अगर सिर्फ एक्शन होता, एक आप सिर्फ एक इंडिविजुअल की अपनी मनमानी बात कर रहे होते, then there are chances it might be unregulated and unstructured. Since we are talking about social action, that's the name itself suggests that this action is very much governed by the norms, values, expectations of a society at large. तो इसलिए वो structured होगा. What are structured? The set of interrelationships that develop between people in a society. Okay, and it is regulated. Obviously, society regulates your actions, so that's why it's regulated. नेक्स्ट, तो ए और बी तो करेक्ट है. ठीक है, तो ए और बी तो करेक्ट है. फिलहाल अभी हम स्टेटमेंट 2 तक पहुंचे हैं, ऑप्शन 2 तक पहुंचे हैं. Now, see, macro sociology focuses on the social behavior and interaction of individuals, small groups and events. ठीक है, अभी एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, बट आई टॉट यू दैट दैट इज माइक्रो सोशियोलॉजी. तो ये सी और डी इंटरचेंज्ड है. ठीक है, इट शुड बी मैक्रो. मैक्रो सोशियोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ large scale social phenomena and comparative historical analysis of many societies. तो सी और डी तो इनकरेक्ट है, तो we'll go with A and B are correct. Now next, sociology teaches us to see the world from many vantage points, not just of our own but also that of others unlike ourselves. It is true or false? This is true. We did reflexivity yesterday. ठीक है, तो ये reflexivity का statement है ये. Now come to question number 10. Public sociology is accessible to common people and has no relationship with professional sociology. False. ठीक है. बेसिकली पब्लिक सोशियोलॉजी टर्म वहां से आ रहा है कि when professionals have actually created some theory of sociology and they have produced a work on it, but they're using that kind of sociology and making that accessible to larger public also. That is public sociology. But इसमें भी professional sociologists involved हो रहे हैं. That is altogether a different thing, that their work has been opened for the use and for the appreciation by a normal public also. तो ये false है.
ठीक है, हैज नो रिलेशन दिया है, देयर इज सर्टेनली अ रिलेशनशिप विद द जनरल पब्लिक. ओके, सो दिस वाज द question uh, with regard to the classes we did yesterday. Now, moving on to our next topic, we'll do demographic structure of Indian society. Okay, so this part of syllabus is very much loaded with lots of facts. There are chances that you might get a few questions based on graphs or representations. ठीक है, and they might also ask you certain questions with regard to basic concepts. For example, हम जब भी बर्थ रेट की बात कर रहे होते हैं या इन जनरल वी ऑलवेज से या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहे हैं या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की वी आर टॉकिंग अबाउट, वी ऑलवेज यूज द टर्म लाइव बर्थ्स. ठीक है, हैज somebody tried to know what this live implies here? भाई बर्थ बोल लो, लाइफ क्यों लगाया है यहाँ पे? भाई जो पैदा हो रहे हैं तो लाइव ही हैं, बट व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म लाइव हियर? इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स अ विमेन इज नॉट एबल टू गिव बर्थ टू अ लाइव एंटिटी. ठीक है, कई बार आपका मिस कैरेज हुआ है, जो भी हुआ, द फीटस डाइज इनसाइड. ठीक है, तो यू आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग अ लाइव चाइल्ड आउट. उसको बोलते हैं हम स्टिल बर्थ. क्या बोलते हैं? स्टिल बर्थ. मतलब बच्चा लाइव या एक एक जिंदा बच्चा बाहर नहीं निकला. ठीक है, so when we say live birth, we are actually subtracting these many numbers. We are not considering the still birth born babies. Okay, तो इसका इसलिए ये सब क्वेश्चंस भी आपके CUET में या आई थिंक दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम योर CUET ऑल्सो. पोस्ट ग्रेड में भी पूछ सकते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ people might not actually know. Similarly, जब भी हम बोलते हैं बर्थ रेट, ठीक है, इसमें एक आगे लगा देते हैं हम क्रूड बर्थ रेट. क्रूड बर्थ रेट. ओके, बर्थ रेट है, CDV नहीं लिखोगे तो जनरली इट इज कॉल्ड बर्थ रेट इटसेल्फ. व्हाट डज दिस क्रूड स्टैंड्स हियर? वी शुड नो दीज माइनर डिफरेंसेस. क्रूड का मतलब है यू आर नॉट कैलकुलेटिंग एज स्पेसिफिक और जेंडर स्पेसिफिक बर्थ रेट्स होते. तो ये जो बर्थ रेट है ये बहुत ज्यादा अनस्पेसिफिक है. यू आर नॉट स्पेसिफाइंग द कंपोनेंट्स, एज कंपोनेंट्स, सेक्स कंपोनेंट्स, जेंडर कंपोनेंट्स. ठीक है, जब आप इसमें अलग अलग करने लग जाओ, ठीक है, जब आप बोलो फीमेल बर्थ रेट इतना है या मेल बर्थ रेट इतना है या एज कंपोनेंट, जैसे इंडियन सेंसस में फ्रॉम 1961 ऑनवर्ड्स वी स्टार्टेड डूइंग द एज स्पेसिफिक कंपोनेंट्स. ठीक है, तब से फिर हमको पता चलने लग गया कि वी हैव चाइल्ड सेक्स रेशियो. ठीक है, तो even if now our general sex ratio is improving, okay, we'll see that in data and all. If general sex ratio is improving, still we find that child sex ratio is alarmingly low. Child sex ratio is alarmingly low. ठीक है, तो ये एज स्पेसिफिक जो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, if you are not
स्पेसिफाइंग द डेटा, इट्स एन एग्रीगेट डेटा, उसको बोल देते हैं क्रूड बर्थ रेट या क्रूड डेथ रेट। ओके, तो क्रूड का इम्प्लीकेशन यहाँ पे ये है। ओके, तो ये एक दो बेसिक्स थे विच आई ट्राई टू गिव इट टू यू। नाउ वील स्टार्ट as it is your NCRT. We'll take NCRT as a base. इसके beyond नहीं जाना है, and I'll be reading a few lines. Okay. Now, what is demography? What is demography? It is coming from two words. Demos. It's coming from two words. Demos and graphene. ठीक है? Demos and graphene ये first paragraph में ही दिया हुआ है आपका. Read NCRT. Demos means people and graphene means describe. Demography is basically systemic study of population. Systemic study of population. Okay. So there could be a question in CUET that you have to match the following or something. That they might give you this definition, and on the other side you have to identify that what do you call it. Okay. Now again, demography could be of two types. ये सब NCRT में ही दिया हुआ है. Formal demography and other is social demography. ठीक है? Formal and social. Now, formal, as the name implies, you are not concerned with the social and political aspects of the population study as a whole. What you're trying to do is you're just creating a survey to get the data around it. So, formal demography is very quantitative. ठीक है, आपने सर्वे किया, कौन कितना क्या है, that's it. When you come to social demography, it's more qualitative. Why? Because through demography, through systemic study of population, what you're trying to do is you're trying to get into the social political context of the population. Social political context of the population. Okay, so we have two, social and formal demography. Now again, yesterday we did a lot of things regarding sociology. Now you can link an aspect from demography chapter to the sociology again. So there's basically NCRT is telling you the emergence of sociology. Okay, demography से ही related है emergence of sociology. So I told you about formal demography. Now enumeration and surveys around people, population, etc. have been having since long time, since ancient times, time period. But what is the difference in the modern times? The difference is
that in modern times, these surveys, etc., yeah, enumeration, they became more scientific. Okay, why? Because we see the rise of a discipline, statistics. Okay, so what NCRT is telling here, that how the study of demography and statistics, etc., they gave rise to the new discipline which is sociology. Okay, since the availability of data became more scientific, we had statistics to analyze the data in the modern way. It led to the modern sociology. So sociology is more inclined towards science, and sociology is a very modern subject. We basically see the rise of sociology in late 18th, early 19th century, when the likes of Auguste Comte, etc., they try to indulge into scientific methodologies to study scientific phenomena, etc. Okay, so what is happening here? The NCRT says that emergence of sociology and its successful establishment as an academic discipline owed a lot to demography. Two different processes were happening roughly at the same time in Europe during the latter half of the 18th century. तो एक statement ये हो सकता है कि emergence of sociology, I told you, basically happening in the latter half of the 18th century. Okay, so दो चीजें बता रहे हैं यहाँ पे. डेमोग्राफी का रिलेशन दे आर कनेक्टिंग विथ, भाई क्यों ज़रूरत पड़ रही है डेमोज या पीपल को पढ़ने के लिए? दो रीजंस हैं लेट एट सेंचुरीज में, लेट 18th सेंचुरी में. एक तो है राइज ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट्स. ओके, एंड अदर इज राइज ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स डिसिप्लिन. मॉडर्न नेशन स्टेट्स एंड, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेट 18th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ दैट यू स्टार्टेड नीडिंग डेमोग्राफी एंड देन इवेंचुअली सोशियोलॉजी. ओके, तो you'll find that in 1790, the American census was probably the first modern census. तो ये आपको 1719 अमेरिकन सेंसस याद होना चाहिए, क्योंकि सीयूईटी में क्वेश्चन इंडियन सेंसस से आया है कि व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम census became a regularized feature in India by British government. That year was 1881. Although they started preparing for it earlier, ठीक है पहले भी किया, but क्वेश्चन था रेगुलर एक्सरसाइज कब बना. इट बेसिकली बिकेम इन 1881. बट सिंस वी आर डूइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड डेमोग्राफी, वी शुड ऑल्सो बी अवेयर कि भाई इनमें रिलेशनशिप क्या है. 1719 में वी सी अमेरिकन सेंसस, द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ओके, नाउ since modern nation states are rising, ठीक है, तो यू वी स्टडी दैट स्टेट की जरूरत क्या होती है. व्हाई डू वी नीड एक्चुअली स्टेट? वी नीड स्टेट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. ओके, टू गवर्न अ सोसाइटी. ठीक है, अब गवर्न कैसे करोगे? फॉर दैट यू नीड डेटा.
डेटा कहाँ से आएगा? यही डेमोग्राफी का काम हो रहा है, इसको हम बोल देंगे सोशल स्टैटिस्टिक्स। इसको हम बोलेंगे सोशल स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो देयर इज अ लाइन दैट द न्यू एंड कॉन्स्टेंटली expanding sphere of state activity required a systemic and regular collection of social statistics or quantitative data on various aspects of population and economy. This could be a standalone question in CUET or match the following में कि भाई social statistics है क्या? Basically, it's a quantitative data on various aspects of population and economy. The practice of collection of social statistics by the state is one form is census. So American census in 1790 is the first modern census, and the practice was soon adopted in other countries of the Europe and India. The census began to be conducted by the British Indian government between 1867 and 72. ये ईयर भी आपको याद होना चाहिए। 1867 and 72 के बीच में they started conducting this, but census became a regular exercise in Indian subcontinent in 1881. Here is landmark here, you should know it. Okay, and in independent India, the first census was conducted in 1951. The first ever census was conducted in 1951. तो अगर क्वेश्चन आता है CUET में, the first census of independent India वो 1951 का था, और अगर आता है द फर्स्ट एवर सेंसस एवर कंडक्टेड इन इंडिया, तो उसका ईयर होगा 1881। तो यू शुड बी एबल टू रीड व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया बोल रहा है तो तब 1881 में इंडिया वाजंट इंडिपेंडेंट। ओके, 1951 इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट सेंसस। ठीक है, एंड 1951 से 2011 तक वी हैव डन सेंसस कंटिन्यूसली, नॉन स्टॉप हमने सेंसस किया है। बट you should know that the next census, which was due in 2021, it did not take place because of COVID epidemic. Okay, which is still in limbo, which is still in limbo. तो अगर प्री में क्वेश्चन आता है, अगर CUET में क्वेश्चन आता है आपका, that do we have eighth census of independent India? The answer is no. ठीक, क्योंकि एट्थ जो था आपका यही 2021 का होने वाला था, which did not happen. So we do not have the eighth census. So we're still relying on 2011 data. Also, there is some new data with regard to National Family Health Survey data 2020, और एक और डेटा है which I'll tell you eventually, that is known as Sample Registration System. Central Sample Registration System। ठीक है, तो इंडिया में अगर पॉपुलेशन से संबंधित हमको अगर डेटा चाहिए, डेमोग्राफी से संबंधित, ठीक है, तो ऑफिशियल तो सेंसस होता है। ठीक है, ये कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, और
इसी से मिलता जुलता एक है आपका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS। ठीक है, ये भी कौन कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही आता है। एंड द लेटेस्ट रिपोर्ट इज ऑफ 2020। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम लेटेस्ट रिपोर्ट इज ऑफ 2020। ठीक है, और यू शुड नो कि सेंसस एंड सैंपल रजिस्ट्रेशन ये जो दोनों है बेसिकली है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बट कंडक्ट कौन करवा रहा है इंडिया में? एंड हु इज अल्टीमेटली द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द रिपोर्ट्स? उसको बोलते हैं हम रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ओके, तो दीज आर बेसिकली ये ऑफिशियल डेटाज होते हैं, बट इसके अलावा एक अनऑफिशियल डेटा है जो जनरली वी माइट यूज फॉर एनालिसिस एंड आंसर राइटिंग एंड ऑल, बट वो इतने ऑफिशियली डेमोग्राफिक डेटा से रिलेशन में नहीं लिए जाते हैं। दैट इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ। ठीक है, उसी को बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS का भी राउंड फिफ्थ का डेटा आया हुआ है 2020 का। तो दिस यू शुड नो, सब बेसिक, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट यू शुड नो। ओके, तो दीज आर द बेसिक्स रिगार्डिंग डेमोग्राफी। ने सब किया। सो डू वी हैव एट्थ सेंसस? नो वी डोंट हैव। ठीक है, वी डिड फॉर्मल सोशियोलॉजी, फॉर्मल डेमोग्राफी एंड सोशल डेमोग्राफी। ओके, इस इस सोशल डेमोग्राफी को हम एक चीज से और रिलेट कर सकते हैं, द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज से भी। ठीक है, दे बोथ आर रिलेटेड, सोशल डेमोग्राफी एंड द population studies as well. So there's a paragraph in NCRT, basically I'm reading it out. It says that sometimes a distinction is made between formal demography and a broader fields of population studies. Formal demography is primarily concerned with the measurement and analysis of the components of population change. Okay, it focuses on the quantitative analysis, in which it has a highly developed mathematical methodology suitable for forecasting population growth and changes in the composition of population. Basically, it's more quantitative. आप data कर रहे हो. As opposed to this, population studies or social demography. हमने किया यही, social demography, population studies. They is inquires into the wider causes and consequences of population structures and change. Social demographers believe that social processes and structures regulate demographic processes. Like sociologists, they seek to trace the social reasons that accounts for population trends. So they will get into the
social reasons behind population trend, behind any sort of population trend. Okay, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको ये पता होना चाहिए, that suicide, I used this example earlier also, ठीक है, that suicide rate या suicide, ठीक है, तो जो सोश एक तो होगा जो फॉर्मल डेमोग्राफर होगा, ये क्या करेगा, ही विल ओनली लुक इनटू द डेटा ऑफ सुसाइड, कितने सुसाइड हुए, इज देयर एनी चेंज इन द नंबर, की राइज हुए कि डिक्रीज हुए. ओके, दिस इज फॉर्मल डेमोग्राफर. एज अपोज टू दिस, one who is doing population studies or who is a social demographer, ये क्या करेगा, he will also look into the social cause behind social suicide. Okay, social cause behind suicide. तो हमारे एक बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं, यू शुड नो दिस, इट्स मेंशन इन योर एनसीईआरटी, एमिल डर्कहिम. एमिल डर्कहिम, ठीक है, he gave his famous study of suicides, how why rates are changing, why there is a variation in suicide rates across the regions. For example, modern societies undergo larger suicide rates as compared to traditional societies. ठीक है, तो we don't have to get into the reasons of that, but you should know that ये आपका match the following में ये question आ सकता है. So Adam Smith, he was what? He was an English philosopher and English economist. I told you. Uh, Emile Durkheim क्या है आपके? He is a French sociologist. He is a French sociologist. ठीक है? This name is very important. French sociologist. ये आपका pre-based CUET में हो सकता है question, multiple choices में. And I'm reading a line. It's given over here. Okay. Emile Durkheim's famous study explaining the variation in suicide rates across different countries was a good example of social demography because it's telling you that how it's a social phenomena. Durkheim argued that the rate of suicide, that is number of suicides per thousand population, had to be explained by social causes, even though each particular instance of suicide may have involved reasons specific to that individual or her or his circumstances. Okay, so this you should know that he was a French sociologist. और ये उसका सुसाइड, तो अगर मान लो मैथ्स में आता है कि थ्योरी ऑफ सुसाइड, तो आप फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट ऐड कर दीजिएगा. yesterday I dealt with a statement by C. Wright Mills. ठीक है, तो his statement was regarding sociology and social mapping, and social mapping, ठीक है, how sociology helps you map
the individual problems with social problems. Individual problems with social problems. ओके, ये हो गया. Now, this was the very basics of demography, like why we are doing demography, what's the importance of demography. Because see, studying demography give you all the socio-political context of a society. तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो वी पिक्ड अप 2 3 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि भाई अमेरिका में फर्स्ट एवर मॉडर्न सेंसस ऑफ द वर्ल्ड हैपेंड 1790. इंडिया में दे स्टार्टेड डूइंग इन 1868-72, but the modern and regular census that is happening in India, it's been since 1881. Independent India का first census was in 1951. Independent India का 8th census which was supposed to happen in 2021 did not happen. Okay, so ये आपका basic हो गया. Now we will get on to the, some basic concepts and theories regarding demography. Concepts, theories around demography. ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्टैंड अलोन देयर इज अ पिक्चर ऑल्सो, यू शुड ऑल्सो. हाँ, एक चीज़ ये भी है, आप थोड़ा एनसीईआरटी की बुक्स में यू शुड ऑल्सो सी द पिक्चर्स एंड ट्राई टू रिमेंबर द पिक्चर्स. ऐसा हुआ तो नहीं है, बट दे माइट ओनली गिव अ पिक्चर एंड दे माइट आस्क यू टू मैच. शक्ल देख के पहचानो कौन क्या है. ठीक है, वी नेवर नो दैट. तो थोड़ा सा ये शक्ल देख लीजिए, माल्थस की उसमें दी हुई है. ठीक है, नाउ यू शुड नो हिज full name is Thomas Robert Malthus. So he is giving a theory regarding population. Thomas Malthus, Robert Malthus. ठीक है, his work he is giving in year 1798. I think ये year याद करना important नहीं है, but you should know in what he is giving this his theory of population growth. ठीक है, इसको बोलते हैं the theory of population growth. ये जनाब ये थियरी दे रहे हैं इन हिज एसे ऑन पॉपुलेशन. हिज एसे ऑन पॉपुलेशन. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट, ये आपको याद होना चाहिए. थॉमस रॉबर्ट माल्थस. अगेन, हु वाज ही वाज एन Malthus was an English political economist. Okay, so generally what political economists tell, they tell the interrelationship between politics and economy, how politics affects economy, how economy affects politics, etc. इतना बस आप जान के रखिए. ठीक है, so what Malthus is telling, Malthus is telling that population, because at that point of time Europe was undergoing this. Okay, so population basically increases very fast in geometric progression. Population increases very fast in geometric progression, like 1 के बाद 2, 2 के बाद 4,
4 के बाद आपका हो गया 16, ठीक है? तो ऐसे बढ़ती जा रही है आपकी पॉपुलेशन, ठीक? So population is increasing at a very fast pace, but in comparison to that, food, okay, the food production, that only increases in arithmetic progression. Arithmetic progression. That is 2, 4, 6, 8, 10, etc. ठीक है, इसमें रेशियो जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें आप देख रहे हो 2:2 का मेंटेन्ड है. So he says because the population growth always outstrips growth in production of subsistence resources. Subsistence resources क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, जो आपको बेसिक requirements हैं to survive. So they always lack to each other, and the only way to increase prosperity is by controlling the growth of population. So in order to sustain, in order to live on earth, you have two options: either decrease population or increase food production. But food production is generally will always increase in arithmetic progression, but population is not decreasing, that is going on and on with the आपका geometric progression. तो ये क्या कह रहा है? He is suggesting there are two checks which can be done to check the growth of population. He's talking about two checks. First is preventive checks, okay, and other is positive checks. One is presumptive checks, another is positive checks. ठीक है, दिस यू शुड नो. मार्क मार्क ये दिमाग में बैठा के रखिए. देयर कुड बी अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन कि भाई ये चार चीज में आइडेंटिफाई व्हाट इज अ प्रिवेंटिव चेक. ओके, सो व्हाट आर प्रिवेंटिव चेक्स? प्रिवेंटिव चेक्स are more of voluntarily checks to reduce the growth in population, such as postponing marriage or practicing sexual abstinence or following celibacy etc. तो ठीक क्या है ये? प्रिवेंटिव चेक्स क्या है? शादी डिले कर दी आप, यू आर यूजिंग, या आप सेलिब्रेट हो, या यू आर यूजिंग प्रिवेंटिव चेक्स लाइक यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स एटसेट्रा. तो ये सब आपका आ जाएगा प्रिवेंटिव चेक्स में. दीज आर वॉलंटरी मेजर्स. ओके, पॉजिटिव चेक्स क्या है? ये इनवॉलेंट्री होंगे मोस्टली. ठीक, जैसे अभी कोविड आया, अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन गॉट फ्लश्ड आउट. तो ये क्या हमने खुद से कोविड लाया, हमने खुद बुलाया? नो, दीज आर इनवॉलेंट्री चेक्स. तो पॉजिटिव चेक्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ आर इन द फॉर्म ऑफ फेमीन्स एंड डिजीजेस. तो पॉजिटिव चेक्स में आपका आ जाएगा फेमीन्स एंड डिजीजेस. ओके, तो जैसे अभी आप देखो पाकिस्तान में देयर इज अ फूड प्रॉब्लम. ठीक है, आटा लेने जा रहे हैं तो गिर गिरा के लोग मर जा रहे हैं. तो व्हाट इज दैट? दैट्स इट्स सॉर्ट ऑफ फेमीन ओनली. भुखमरी आ गई है वहाँ पे इतनी ज़्यादा. तो ट्रक व्रक से भी मरे दो चार, ऐसे पता नहीं कितने मर जाएंगे, यू नेवर नो. ठीक है, ऐसे ही डिजीजेस. तो अभी कोविड पेंडेमिक रहा, इससे पहले देयर हैड बीन फ्लूज एंड इन्फ्लुएंजा एटसेट्रा. 1918 का इन्फ्लुएंजा है, उसमें मिलियंस मारे गए, कितने तो इंडियंस ही मारे गए. ओके, सो famines and diseases because they become inevitable because they are nature's way of dealing with imbalance between food supply and increasing population. ठीक है, but can you call this theory of Malthus relevant today, or is it, does it stand true today?
No. Why? Because in Europe itself we saw what we saw with the development of modern contraceptives, etc. Your population growth declined, your death rates declined. Okay, दोनों ही decline हुआ आपका. The pattern of population growth in Europe changed in latter half of the 19th century, and by the end of first quarter of 20th century, changes were quite dramatic. Birth rates had declined, and the outbreaks of epidemic diseases were controlled. Martha's predictions were proved false because both food production and standards of living continue to rise despite the rapid growth of population. ठीक है, जब बर्थ रेट भी आपका कंट्रोल है, ये भी है, बट वी सी अ पॉपुलेशन मोमेंटम एक्चुअली, और आपका जो नेचुरल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, द डिफरेंस बिटवीन क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट, उसको हम बोलते हैं नेचुरल इंक्रीज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वो मेंटेन हो जाता है आपका. एंड वी सी इन यूरोपियन नेशंस इटसेल्फ दैट डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स वी सी द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज राइजिंग. ठीक है, आपका फूड प्रोडक्शन भी राइज हो गया. तो माल्थस एक्चुअली proved wrong. Who criticizes Malthus mostly? So Malthus is mostly criticized by both liberals and Marxist. ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आगे कहीं आया एनसीईआरटी में रेलेवेंट लगा विल डू इट, बट हियर आप ये जान के रखिए कि what Malthus is saying. Malthus is actually acting more like an elite, and he's saying that poverty is caused due to unchecked population growth. Okay, so poverty is an outcome of population growth. It's better that you control the population because there's always a mismatch between resources and population. So both Marxists and liberals are criticizing Malthus for this, and they say that unequal distribution of economic resources are rather the cause of starvation, poverty, rather than outcome of द पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, तो ये हमने आज माल्थस की थियरी की. इन दैट वी गॉट टू नो दैट population grow by geometric progression and food production and resources they grow by arithmetic progression. There is always a mismatch. So humanity is doomed to die क्योंकि प्रिवेंटिव चेक्स तो कम होंगे, ये ज़्यादा होंगे पॉजिटिव चेक्स इन द फॉर्म ऑफ फेमीन्स एंड डिजीजेस. फेमीन्स एंड डिजीजेस. ओके, ये ये थ्योरी कह रही है. ठीक, नॉट. So this is all for today. Tomorrow we'll do demographic transition theory and other related data with regard to your demography. Okay. So today we dealt with questions and why demography, social demography, formal demography, population studies, क्या क्या data है उससे regarding में, and the first concept or first theory with regard to your uh, demography and population given by Malthus. He is English political economist. Durkheim is what? Durkheim is your French sociologist who gave the study of suicide. That's all for today. Thank you.